Hello everyone, welcome back to your favorite channel, the Solemn Tutor. In the last video, we have already discussed the fourth unit of Nightingale and the Rose, in which we know that how the nightingale has to suffer to guard a red rose. गोटे red rose पाइबा पई nightingale को कौन सहीबा पई पड़ीथिला सफर करिबा पई पड़ीथिला सेटा हमें फोर्थ यूनिट रे पढ़ी सारिछे एंड फाइनली से कौन कहिथिला से ता लाइफ को सैक्रिफाइस कर देथिला एंड से निज रक्तरू गोटे रेड रोज तैयारी करिथिला तो नाइटिंगेल टी इन रिटर्न रे से जो प्रतिश्रुति चाहिथिला एश्योरेंस चाहिथिला देखिबा कौन होइछि सो वीडियोटी को स्किप न करी लास्ट पर्यंत देखंतु सो स्टार्ट करिबा नेक्स्ट यूनिट रो वार्म अप रु All fairy tales end with the expression and they lived happily ever after. Read the following unit of the story and mark how the story comes to an end. आमे जानिछे सब फेरी टेल्स गुड़िक गोटे एक्सप्रेशन रु एंड होता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर हैप्पीली शेष होता है बट एठारे देखिबा ए स्टोरी रो एंड केमिति होइछि देन द टेक्स्ट And at noon the student opened his window and looked out. Why, what a wonderful piece of luck, he cried. Here is a red rose. I have never seen any rose like it in all my life. It is so beautiful that I am sure it has a long Latin name. And he leaned down and plucked it. Student ठीक मध्याह्न समय से शोईकी उठिला एंड तार विंडो खोली देखिला एंड से कहूँ कि भाग्य मोर से कांदी पकेला एंड कहला हियर इज ए रेड रोज एमती रेड रोज मो जीवन रे केबे देखी नाही एहा एते ब्यूटीफुल जे एहार निश्चित भावे गोटे लॉन्ग लैटिन नेम थिबो एंड से लीन डाउन होई फुलटी को से छिड़ाई देला एकथारु आमे जानि पारछु जे पिलाटी केते मेटेरियलिस्टिक से सब बेले बुक्स रे कोन लेखा हिची से सब भाबे Then he put on his hat and ran up to the professor's house with the rose in his hand. Then से तार टोपी को पिंधिला एंड कोन कला से रोज को हाथ रे धरी प्रोफेसर हाउस को घर को दौड़िला एक्चुअली से जो झील को लव करुला से एक्चुअली प्रोफेसर को झील थिला The daughter of the professor was sitting in the doorway winding blue silk on a reel and her little duck was lying at her feet. प्रोफेसर को झीलटी कौन करुला से कबाट बा डोरवे रे पाखरे बसी गोटे रील रे ब्लू सिल्क गोड़ौथिला एंड तार डग तार फीट रे सोईथिला You said that you'd dance with me if I brought you a red rose, cried the student. Here is the reddest rose in all the world. You'll wear it tonight next your heart, and as we dance together, it will tell you how I love you. Then se student कांदी कांदी कहला तुम्हें मते कहिथिल जदि मु तुम पई गोटे रेड रोज आनिबी तुम्हें मो सहित डांस करिब एहा वर्ल्ड सबुठारु रेडेस्ट रोज लाल गोलाप एहाकू आज राति रे तुम्हें हार्ट रो नेक्स्ट रे पिंधिब एंड आमे दुहे जेते बेले डांस करूथबा एहा तुमको कहिबा मु केते तुमको एक्चुअली भला पाए बट द गर्ल फ्रॉन्ट बट झीटी कौन कला फ्रॉन्ट माने रागरे गर्जन कला I am afraid it will not go with my dress, she answered. And besides, the Chamberlain nephew has sent me some real jewels, and everybody knows that jewels cost far more than flowers. से कहिला मु भाबुछि मो ड्रेस रे एहा जीवनी एंड बिसाइड्स एहा व्यतीत चैम्बरलेन का नेफ्यू मो पाई किछि रियल ज्वेल्स मुक्ता उपहार पठाई एंड समस्त जानती जे ज्वेल्स बा मुक्ता अलंकार फ्लावर्स टू बेसी मूल्यवान ये सब कही से झीटी मना कर जना पड़े झीटीर कौन एफेक्शन नथिला से स्टूडेंट प्रति सो से चैम्बरलेन को नेफ्यूर
रियल जल्स देखी से तार मन परिवर्तन कर देछि। Well upon my word, you are very ungrateful, said the student angrily, and he threw the rose into the street, where it fell into the gutter and a cart wheel went over it. Then से young student रागी की कहिला, well upon my words तुमे बहुत ungrateful अकृतज्ञ यह कही से कौन कही से रोज को रास्ता रे फिंगी देइछि जोटा कि गोटे गटर बा नालरे पड़ी जाइछि एंड फाइनली गोटे सगर गाड़ी चक यहाँ उपरे माड़ी जाइछि। एठारे रोजटा केवल नष्ट हो जाए नहीं, एठारे से निरीह नाइटिंगेल जीवन मूल्य मध्य नष्ट हो जाइछि। Ungrateful, said the girl, I tell you something, you are very rude, and after all, who are you? Only a student. Why, I don't believe you have even got silver buckles to your shoe as the Chamberlain's nephew has. And she got up from her chair and went into the house. Then से झीटी कहला अनग्रेटफुल अकृतज्ञ मु गोटे कथा कहबी जे तुमे बहुत रूड एंड या छड़ा तुमे किए केवल गोटे स्टूडेंट मु बिलीव करूनी चैम्बरलेन का नेफ्यूर शूज रे जेमिति सिल्वर बकल्स अच्छी तुमर नथिबो एंड से कौन कही ता चेयर उठी पड़ी एंड ता घर भीतर को पशि जाइछि। What a silly thing love is, said the student as he walked away. It is not half as useful as logic, for it does not prove anything, and it is always telling one of things that are not going to happen and making one believe things that are not true. In fact, it is quite unpractical, and as in this age to be practical is everything, I shall go back to philosophy and study metaphysics. स्टूडेंटी जिते बेले सेठारु चली आसुला से कहला लवटा गोटे सिली थिंग तार लव प्रति थिबा आशाटा एबे चली जाइछि से कहूछि एहा लॉजिक रो हाफ बा अधा मध्य यूजफुल नुहे जेमिति लॉजिकटा यूजफुल अटे कारण एहा किछि प्रूव करि पारे नाही एहा सब बेले गोटे जिनिस कहे जहा कि केबे घटे नाही नॉट गोइंग टू हैपन एंड making one believe things that are not true. In fact, यह अनप्रैक्टिकल बा अवास्तव एंड एही एज रे प्रैक्टिकल हेबा ही सब किछि सो से कहूछि आई शैल गो बैक टू फिलोसफी एंड स्टडी मेटाफिजिक्स से देन डिसाइड करिछि फिलोसफी को जाई से मेटाफिजिक्स बा आध्यात्मिक ज्ञान पढ़िबो. So he returned to his room and pulled out a great dusty book and began to read. So से तार रूम को जाइछि एंड गोटे ग्रेट डस्टी बुक को से काढ़ीछि एंड से पढ़िबा को लागिछि. बुकटा डस्ट हो जाइथिला माने एथि जणा पड़ुछि से बहुत दिनरु मे भी पढ़ु नथिला. तो एठारे आमे जानिले किबली भाबरे गोटे निरीह प्राणी गोटे नाइटिंगेल रा जीवन रा मूल्यटा नष्ट हो जाइछि. We know that in present materialistic society love is a deception which has no honesty and faithfulness. It is now counted upon the amount of gold jewelry, bank balance, material prosperity, etc. And in this story, a nightingale sacrificed her life because she thinks that love is mightier than everything. But in present materialistic world, it has no meaning. It is a mere thing for people. So, एथिला नाइटिंगेल एंड द रोज रा लास्ट यूनिट. तो जो माने पर्यंत प्रीवियस वीडियो गुड़िक देखि नांती प्लीज देखि नेबे. मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक शेयर कर दउछि and I will be coming with the next video very soon. So till that, keep watching and subscribe the channel to get more videos. Thank you.